Hello students, welcome back in our grammar class. In previous video, we have studied kinds of prepositions and now in this video, we will study about the remaining prepositions. Our first preposition is over. The meaning of over is upar. Example, fan is running over my head. पंखा मेरे हेड के ऊपर चल रहा है. फोटो फ्रेम इज हैंगिंग ओवर माई हेड. फोटो फ्रेम मेरे हेड के ऊपर टंगी हुई है. अबाव, द सेम मीनिंग ऑफ अबाव इज ऊपर होना एंड श्रेष्ठ होना. हायर देन ओवर, यह ऊपर से ओवर से भी ऊपर होता है. एग्जाम्पल, द प्लेन फ्लू अबाउट द क्लाउड्स. प्लेन क्लाउड्स के ऊपर उड़ रहा है. अर्लियर ऑन पेज there is a heading above each diagram. So here you are thinking that the meaning of over and above is same, which is that upar. But there is a condition between over and above, like जब कोई चीज just हमारे ऊपर हो तब हम over का यूज करते हैं. Like fan is running over my head. But जब कोई हमारे बीच में परत आ जाती है या कोट आ जाती है तब हम अबाव का यूज करते हैं. एग्जाम्पल, इफ आई एम प्रेजेंटिंग आउटसाइड द हाउस एंड हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग, देन आई विल से हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग ओवर माई हेड. बट इफ आई एम इनसाइड द हाउस, देन आई यूज हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग अबाउट द रूफ. यहाँ हेलीकॉप्टर और मेरे बीच एक कोट आ गई है. दैट इज वाई वी आर यूजिंग अबाव. द नेक्स्ट इज अक्रॉस. एक तरफ से दूसरी तरफ या दूसरे किनारे पर. सम एग्जाम्पल्स आर, फ्रॉम वन साइड टू अदर, वी वॉक्ड अक्रॉस द फील्ड. आई यूज्ड टू अक्रॉस दिस रिवर इन माई चाइल्डहुड. मैं अपने बचपन में यह नदी को पार किया करती थी. ऑन अदर साइड, एग्जाम्पल्स, देयर इज अ हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट. There is other road across the zebra line. Our next preposition is after. So students, you are very well familiar with this word. But there is some more conditions with this word, like later in time. After 10 o'clock, I'll come after 10 o'clock. I will attend the meeting after lunch. Later in series, U comes after I in the alphabets. Alphabets में U I के बाद आता है. In pursuit of, the dog ran after the cat. Dog cat के पीछे भागा. The next is along. किनारे किनारे चलना या साथ साथ चलना, which means following the length of. The example is, snake is crawling along the river. स्नेक रिवर के साथ साथ रेंग रहा है. वी वॉक्ड अलॉन्ग द रोड, पाथ, बैंक, फील्ड, फेंस, एक्सेट्रा. द नेक्स्ट प्रिपोजिशन इज अमंग. दो से ज्यादा के बीच में होना, विच मीन्स विद इन अ ग्रुप. एग्जाम्पल्स, द मनी वॉज शेयर्ड अमंग 3 पीपल. जब हम दो से ज्यादा लोगों की बात करते हैं तब हम अमंग का यूज करते हैं. एग्जाम्पल, मनी को ज्यादा लोगों में शेयर कर दिया गया है. डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स अमंग द स्टूडेंट्स. ये सारी चॉकलेट्स स्टूडेंट्स के बीच में बांट दी जाए. द नेक्स्ट इज बिफोर, मीन्स पहले. अर्लियर इन टाइम. एग्जाम्पल्स, बिफोर 10 o'clock, you have to attend the meeting before 2 o'clock. Before Diwali, so I will complete my housework before Diwali. Earlier in series, S comes before T in the alphabets. Next preposition is behind, at the back of, which means पीछे. Some example, the little girl hid behind her mother. छोटी लड़की उसकी मम्मी के पीछे छिप गई है. Late, पीछे होना. I am behind in my work. मैं अपने काम में पीछे हूँ. Cause, which means कारण का होना. Example,
Who is behind this idea? इस आइडिया के पीछे कौन है? नेक्स्ट इज बिलो. बिलो मीन्स नीचे. लोअर देन अंडर. जस्ट एग्जाम्पल, बिलो द सी लेवल. एग्जाम्पल्स, रॉक्स आर बिलो द सी. चट्टाने जो हैं समुद्र के अंदर की तरफ हैं. नेक्स्ट इज बिसाइड. मीन्स बगल में. विच मीन्स नेक्स्ट टू. एग्जाम्पल, आई सिट बिसाइड हर इन द क्लास. मैं क्लास में उसके बाजू में बैठती हूँ. माई कार इज बिसाइड योर कार. मेरी कार तुम्हारी कार के बाजू में है. द अदर इज बिसाइड्स. इसके अलावा. विच मीन्स ऑल्सो, एज वेल एज. एग्जाम्पल्स, वी स्टडी अदर लैंग्वेजेस बिसाइड्स इंग्लिश. आई हैव अ लैपटॉप बिसाइड्स डेस्कटॉप. मेरे पास डेस्कटॉप के अलावा लैपटॉप भी है. नेक्स्ट इज बिटवीन. बीच में. एन इंटरमीडिएट लोकेशन. इंटरमीडिएट मीन्स मध्य. एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश लाइज बिटवीन महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश. एन इंटरमीडिएट टाइम. एग्जाम्पल, party is organized between Christmas and New Year's Day. Intermediate in a series. Example, B comes between A and C in the alphabets. Within a group. Example, the money was shared between two persons. Next is beyond. के परे. Exceeding. Example, function was beyond my expectation. फंक्शन मेरी एक्सपेक्टेशन के परे था. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग. ड्यूरिंग मीन्स दौरान. थ्रू आउट अ पीरियड. एग्जाम्पल, शी वर्क्स ड्यूरिंग द डे. वह दिन के दौरान काम करती है. समटाइम्स विद इन अ पीरियड. एग्जाम्पल्स, एन एक्सीडेंट अकर्ड ड्यूरिंग द नाइट. रात के दौरान एक्सीडेंट हो गया. नेक्स्ट इज फॉर. मीन्स के लिए. ड्यूरेशन ऑफ टाइम. एग्जाम्पल, वी वॉक्ड फॉर 2 hours. डिस्टेंस. एग्जाम्पल्स, आई वॉक्ड फॉर 5 kilometers. पर्पस. एग्जाम्पल, आई बॉट दिस जैकेट फॉर यू. इन द डायरेक्शन ऑफ. एग्जाम्पल्स, शी लेफ्ट फॉर भोपाल. नेक्स्ट इज ऑफ. Not and away from. Examples, please keep off the grass. At distance from. There are islands off the coast. Next and last is from. Say. Place of origin. Starting point. We left from Indore. He came from Jodhpur. Started of a period of time. Examples, from now. Make it a point that from now we will speak only English. From yesterday. From yesterday she is completing her homework. Until today. Until today I have not received your English book. Cause. He suffers from corona. So students, we have completed our preposition. So all have to revise it repeatedly. Until then, take care. Good day.